measurement systems of units and units in SI system. Okay, so let's understand first of all why we need unit for measurement. So I'm going to read, okay, and whichever statement I can explain more, I'll explain that. Physics, like other branches of science, require experimental studies which involve measurements. So for the measurement of a physical quantity, we consider a constant quantity of same nature as a standard, and then we compare the given quantity with the standard quantity. Okay, we find the number which expresses how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity. Okay, so let's see, we'll have an example. Like example यहाँ पे है, if the length of the piece of cloth is 10 meter, so meter क्या है, meter is unit and 10 क्या है, numerical value. So basically the length is measured in the unit meter. Okay, 1 meter, unit meter मतलब 1 meter. So that is the standard quantity. So when, so क्या देखो ना क्या लिखा है, we compare the given quantity with the standard quantity. Okay, and this unit is contained 10 times in the length of that piece of cloth, इसलिए वो 10 मीटर बोलते हैं. So we are comparing with the standard quantity. So physical quantity क्या है यहाँ पे, length. Okay, length of a piece of a cloth. Now how we are measuring? So length is measured in a standard quantity meter, in unit meter. और अपना cloth कितना है, 10 meters, मतलब 10 times in the length of that piece of cloth. So therefore we are comparing. Okay, so the given quantity is compared with the standard quantity, and how we express, okay, how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity. तो यहाँ पे 10 times है. Similarly, take the other example. If the mass of a given quantity of a sugar, so physical quantity क्या है यहाँ पे, mass. It is 5 kilogram. So what is the standard quantity of mass? So mass is measured in unit kilogram. And what is this unit saying? It is contained 5 times in the given quantity of sugar. Okay, I hope you understood. The quantity is 5 times more than the standard quantity. So what is measurement? It is the process of comparison of the given physical quantity. यहाँ पे क्या है, given physical quantity, यहाँ पे mass है, mass of a sugar, with the known standard quantity of same nature. Known standard quantity क्या है, mass. So mass is always going to be measured in kilogram. तो mass को तुम length के साथ नहीं compare करने वाले हो. That's why it's written there. With the known standard quantity of the same nature. Nature should be same, okay? So mass will be measured or compared with the standard quantity, okay? That is mass, and that is also standard quantity का unit क्या है, kilogram. So mass will not be measured in meter. Okay, so the standard quantity already हम देख चुके, used to measure the given physical quantity is called unit. Is called unit. Okay, the standard quantity used to measure is called unit. So quantities of different nature, जैसे length के लिए अलग है, time के लिए अलग है. Okay, so for different quantities you will be having a different unit. So what is unit? Unit क्या है? It is the quantity of a constant magnitude used to measure the magnitude of other quantities of same nature. Okay, तो क्या क्या है, किस किस का यूनिट है हमारे पास? तो we have, I'm just skipping something. तो क्या क्या हमारे पास यूनिट है? mass, so this is of one nature. Second nature is length. Third nature is time. Fourth nature temperature, current, and amount. Okay, and amount of substance. Now these are all fundamental units. Okay, now these units are independent of any other unit. मतलब mass is not dependent on length, या length is not dependent on time. Okay, and these units can never be changed nor can be related to any other fundamental unit. Okay, I hope you understood. So mass is a quantity of a constant magnitude, like 1 kilogram. तो एक यूनिट को हम बोलेंगे 1 kilogram. Okay, या 1 मीटर
लेंथ का यूनिट क्या रहेगा, 1 मीटर. तो यूनिट मीटर विल बी, एंड दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. And why we need a unit? To measure the magnitude of other quantities of the same nature. Okay, like for example, also you can derive the units. Volume किस पे होता है, length into length है ना. So you can actually have measure the magnitude of other quantities of the same nature. Okay, volume क्या है, volume is dependent on length, that way. So the result of measurement of physical quantity is expressed in the terms of following two parameters. एक तो मैंने पहले ही बोला था, unit in which the quantity is being measured, like meter, kilogram, second, and the numeric value which expresses how many times the above selected unit is contained in the given quantity. मतलब 10 meter. This doesn't come, okay, exam में सिर्फ इतना ही आता है, the definition only. Okay, choice of unit. What should be the property? How, matlab, how these properties are being chosen? Okay, so the unit should be of convenient size. You have already seen कि यहाँ पे 1 kilogram, 1 meter. It's a measurable size. Okay, it should be possible to define the unit without ambiguity. Okay, मतलब मीटर और सेंटीमीटर दोनों अलग अलग होते हैं. So there is no ambiguous. मतलब ऐसा तुमने 2 यूनिट बना के नहीं रखा है. It is only one. Okay, the unit should be reproducible. Reproducible मतलब you can actually measure it. जैसे 1 किलोग्राम को कैसे मेजर करते हैं, you can measure it using beam balance. Okay, तराजू बोलते हैं ना, beam balance. और you can measure the क्या बोलते हैं, length by a ruler, or you can measure the seconds by a clock or watch. So it is a reproducible unit. Then also the value of unit should not change with space and time. सोचो इंडिया में है तो यूनिट का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा, यूएस में है तो यूनिट केजी मीन समथिंग एल्स. और टाइम के साथ भी नहीं बदलना चाहिए कि 1920 में सेकेंड्स का मतलब अलग था एंड 2020 में सेकेंड्स का मतलब कुछ और रहेगा. तो अ वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, इट शुड बी सेम everywhere. So based on these conditions, okay, the second, third and the fourth, okay, they are essential for the unit to be accepted internationally. Okay, any doubt in this case? What are the types of unit we have? Fundamental and derived. We already spoke about fundamental. Fundamentals, I already told you, it is independent of any other unit. Okay, so length is never going to be, length is not dependent on kg mass. Okay, or else on time. So what are the fundamental units? Mass hai, length, time, temperature, current, electricity current, current, and amount of substance. Our amount of substance means we are going to see that mole. Like for example, हम पढ़ते हैं ना, जैसे 1 dozen. Now 1 dozen is 12 things. So similarly, 1 mole. So when we measure gas in unit called mole. Okay, so what is 1 mole? 6.023 into 10 raised to 23 things. जैसे, so we are going to study this next year. So 1 mole is 6.023 into 10 raised to 23 things. जैसे हम 1 dozen बोलते हैं तो dozen is also a unit. तो 1 dozen का मतलब है 12 things. तो 1 mole मतलब इतने सारे things, 10 raised to 23 things. Okay, this is for measuring amount of a substance or amount of a gas molecules. Okay, or atoms. This is for measuring that. Okay, so these are fundamental. Then there is something called luminous intensity. Intensity related to light, it is light energy. So that unit is candela. Time is measured in second. Temperature is measured in Kelvin. Electric current we have already studied, ampere.
Then there is something called angle. It is measured in radians. Huh? Normally we measure angle in degree, but the standard unit is given is angle as radian, solid angle steradian. Okay, steradian. Now, so we already know what is. मैम क्वेश्चन है Yeah, tell me. मैम रेडियन और सॉलिड और स्टेरेडियन में फर्क क्या है Angle. So I'll tell you. Angle मतलब it is between two sides ना, दो साइड के बीच में होता है ना एंगल. सॉलिड यस मैम एंगल. एक मिनट. हाँ, I'll just. It's a three-dimensional thing. समझा क्या तुमको? मैम के एक्स वाई जेड. वर्टेक्स एक्स वाई जेड. देखो नॉर्मली दिस इज माय. ओके, सो ये मेरा 90 डिग्री. सो दिस इज एंगल. ओके, एंड व्हाट अबाउट सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा. मतलब सो ओके, सो दिस इज माय, ये y है, this is my x. Okay, x axis, y axis, and this is my z axis. Okay, so solid angle is a three-dimensional angle. Okay, so मतलब कैसे ड्रॉ करो ये? ओके मतलब ऐसा समझा क्या? 3D एंगल. यस 3D मैम एंगल. 3D एंगल. वर्टेक्स ओके, यस मैम ठीक है. ओके, नाउ so what are derived units? The unit of quantity other than those measured in fundamental units. Okay, so you can write directly this okay definition. So derived units are those which are dependent on fundamental units or which can be expressed in terms of fundamental units. For example, we have area. Area क्या है? Length into length या length into breadth. Like if it is a square, then length into length. If it is a rectangle, length into breadth. But length or breadth both are measured in meters. So it doesn't matter. Okay, what about volume? Volume of a cube is length cube. Volume of a cuboid will be length into breadth into height. Fine. Then speed. Speed क्या होगा? It is dependent on two fundamental units. One is distance and another one is time. So distance upon time. ठीक है? Meter per second. So these are called derived units. Okay. कहाँ पे है? They said there is a table. I don't know. Where is the table? मैम पे पता नहीं. Article 1.6. I don't know where it is. Probably in some other. मैम पेज 7 पे है Okay. Uh, मैम बाद में थोड़ा okay. Oh yes. Okay. Okay. Fine. So here we can see area, volume, density, speed, acceleration, force, work, energy, momentum. Momentum we have already seen. Moment of force, power, pressure, frequency. Okay. A lot of them. Solar. So let's. So what are the systems of unit? So length, mass, and time are the three fundamental quantities. For the units of these basic quantities, following systems have been used. Okay. These three, length, mass, and time. ये because ये fundamental quantities है. So first system is CGS system. Okay. So where the length is measured in centimeter, cm, mass in gram, time in seconds only. Okay. What about FPS system? It is foot. Okay. तो ये CGS का full form पता है क्या? It is centimeter, gram, seconds ऐसा कुछ तो है. FPS is the British system. In this length is measured in foot.
ओके, 4 feet 5 feet वैसा वाला जो बोलते हैं ना, सो इट इज मेजर्ड इन फुट. फुट मतलब द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फुट. तो जब आपको 1 फुट बोलना पड़ेगा या 2 feet बोलना पड़ेगा, तो 1 से ज्यादा होगा वो फीट बोलते हैं. मास कैसे करते हैं? पाउंड. तो आई थिंक यू नो वहां पे दे डोंट मेजर इन केजी और ग्राम, दे मेजर इन पाउंड, एलबी. एंड टाइम इज सेकेंड, वो तो सेम रहेगा. व्हाट अबाउट एमकेएस? द लेंथ इज मीटर, मास इज किलोग्राम एंड टाइम इज सेकेंड. ओके. मैम सो तीनों में सेकंड सेम है. या now above mentioned system are now no longer in use and they are only of historical importance. तो इन्होंने क्या किया? collectively they have made another unit, SI unit, मतलब system international unit which is applicable to everyone, मतलब everyone has to use that system only. okay, तो उन्होंने क्या किया? उसका एक simple SI system बनाया. तो SI system में now length you cannot measure in pound, you have to measure in meter only. Mass you have to measure in kilogram, sorry, length is measured in foot na, so you have to measure in meter only. SI unit matlab this is a standard used in whole world. Mass cannot be measured in pound, it will be measured in kilogram. okay, तो पहले ऐसा होता था कि ब्रिटेन में हो तो ब्रिटेन इज टॉकिंग इन पाउंड, यूएस इज टॉकिंग इन एमके सिस्टम. तो सब लोग अपना अपना यूज करेंगे तो कैसा होगा ना. सो दे हैव जस्ट मेड अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट so that like सब लोग एक ही लैंग्वेज बात करें. so this is a common language, okay, of unit. Now use of a prefix with a unit. If you say deca, hecta, hecto, kilo, so do you know what is deca? so if you remember, I don't know कि हम आपको कैसे याद रहता है. तो नॉर्मली किलो, तो अभी मैं मीटर को पकड़ती हूँ. किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर. एम आई राइट? किलो, यस. Yes, no. किलो, हेक्टा. Yes, yeah. क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने डेका को पहले लिखा है, ठीक है. हाँ राइट. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ओके. मैम बट डेका इज 10 raised to 1 ना. हाँ तो ठीक है ना, तो राइट बोला ना. तो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम मीटर, मीटर से पकड़. राइट बोला तूने. तो ये किलोमीटर कितना रहेगा? 10 raised to 3, राइट ना. व्हाट अबाउट हेक्टा? 10 raised to 2. डेका कितना रहेगा? 10 raised to 1. और ये तो 1 हो जाएगा. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू, ओके, लाइक 1000 kilometer. okay, 1 kilometer means 1000 meter. I hope you are understanding what I'm saying. one Yes, ma'am. 1 kilometer is 1000 meter. okay, 1 hectameter is 100 meter. 1 decameter is 10 meter. वैसा वो लोग ने लिखा है. ओके, किलो, तो वी नो. तो किलो के आगे क्या है? व्हाट अबाउट किलो के आगे? तो इट इज मेगा, मेगामीटर. so megameter is 10 raised to 6 meter. okay, giga 10 raised to 9. टेरा, टेराबाइट्स बोलते हैं ना, 10 raised to 12. आपका कंप्यूटर, हाँ, आपका कंप्यूटर रहता है ना, दैट यू हैव अ हार्ड डिस्क ऑफ टेराबाइट. तो टेराबाइट का मतलब है 10 raised to 12, इतना जगह है उसके पास. पेटा 15. 10 raised to 15. तो ये आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग ना वी कैसे इसको. तो एक्सा, जेटा, योटा. तो योटा सबसे ज्यादा है 10 raised to 24. ठीक है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग.
as a fill in the blanks. Okay, now इसके पीछे मतलब now talk about डेसीमीटर, मतलब मीटर के बाद वाला, तो कैसे होगा? तो नेचुरली मीटर के बाद क्या आएगा? तो मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं कुछ, तो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टो। तो बेसिकली देखो अभी, सो मीटर से डेसीमीटर को करने के लिए क्या होगा? तो इट इज कितना, 1 डेसीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 10 रेज टू -1, और यू कैन राइट 1/10, ठीक है। सेंटीमीटर क्या है? 1/100, मिलीमीटर 1/1000, माइक्रो 1/10⁻6, ओके। तो 10⁻⁻6, नैनो -9, पिको -12, फेम्टो। तो ये आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, ऑटो -18, जेप्टो -21, यूएटो 10⁻24। तो थोड़ा सा सिमिलर करके रखा है, इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे योटा इज 10⁻24, यहाँ पे यूएटो इज 10⁻24, यहाँ पे जेटा, यहाँ पे जेप्टो। तो थोड़ा सा सिमिलर रखेंगे, यू कैन रिमेम्बर। एक्सा यहाँ पे ऑटो, ओके। पेटा यहाँ पे फेम्टो, पिको और यहाँ पे क्या है? टेरा। फाइन, हम लोग को नैनो तक, पिको तक याद रखना पड़ता है, लेकिन 12th टिल पिको वी हैव 10⁻12 पिको तक हमारे पास रहता है, ओके। तो दे कैन आस्क यू 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? 2.5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। तो दे कैन आस्क यू टू कन्वर्ट इट, पिको, पिको एफ क्या कैसे करना पड़ेगा? 5.0 इंटू 10⁻12, मेगा ओम्स 10⁶ ओम, मिली सेकेंड 10⁻3 सेकेंड, ओके। सो SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो क्या लिखा है, दे पढ़ते हैं। A meter was originally defined in 1889 as a distance between two marks drawn on a platinum iridium and alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weights and Measure of Severe near Paris. Okay. Later in 1960, the meter was redefined as 1000 कितना? I don't know. बहुत बड़ा है ये नंबर। 16 lakhs है ना? Yes, 16,50,763.73 times the wavelength of a specified orange-red spectral line in emission spectrum of krypton 86. Now, krypton 86 is a radioactive element, okay? So, in that element, they were emitting radiation. तो उसका जो emission हो रहा था, उसका orange या red spectral line का wavelength से some 16 lakhs, that was the meter defined, okay? So you don't have to remember that. So it is one, yeah, noble gas. हाँ Ma'am, krypton is a noble gas, no? हाँ मतलब okay, if you tell me the पूरा ये सीरीज बताओ तो मुझे। मैम पूरा नहीं पता, पर क्रिप्टन था उसमें उतना ही। नहीं, आई नो, हीलियम, नियॉन। तो क्रिप्टॉन एक्चुअली कम्स इन, थोड़ा सा उसमें आ जाता है वो रेडियो एक्टिव, या इट्स अ नोबल गैस, बट इट्स अ, मतलब वो रेडियो एक्टिव के इसमें आ जाता है, मतलब पीरियड 5 या पीरियड 6 में आता है, जस्ट चेक कर लो, ओके। हाँ मैम, रेडियो एक्टिव ही है, ये भी तो क्रिप्टॉन, जेनॉन भी है शायद। हाँ, जेनॉन। तो वो ना, सी वो पीरियड वाइज है, ओके। सो पीरियड, वो पीरियड में बिलोंग करता है तो वो रेडियो एक्टिव कंसिडर करते हैं, ओके। यस, इट्स अ नोबल गैस, but it's also a radioactive, मतलब it emits, मतलब there is a radiation coming out of krypton, okay। तो हर एक टाइम पे देखो ना अलग अलग ना। इन 1983 मीटर वाज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
according to which 1 meter मतलब क्या, the distance traveled by the light in 1 upon so many, मतलब it is 3 into 10 raised to 8 of a second in air. Okay, so that is the distance traveled. तो सबने अलग अलग ये किया, you don't have to remember that. 1983 का ही अभी तक चल रहा है अपने पास. So sub units we know centimeter, millimeter, micrometer, nanometer. So we need to remember the conversion. Okay, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में, माइक्रो को भी. ओके, नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर. 1 बिलियंथ 10⁻⁹ को 1 बिलियंथ बोलते हैं. एंड माइक्रोमीटर को क्या बोलते हैं? 1 मिलियंथ. ओके, मिलीमीटर इज 1000. so you need to remember that. Kilometer is 1000 multiple of our meter. Yeah, so this is all okay, this you know, we can study. But there are certain bigger units. Now this units are used in measuring the distance between two heavenly bodies. We already spoke about heavenly bodies like planets, okay, like moon and earth. So how do you measure the distance? We cannot measure, so there are some higher units. Okay, the kilometer will be very small unit. So there are some other units called astronomical unit. Okay, but there is a conversion between that till meter. So what is one astronomical unit? क्या है? It is the mean distance between the average distance. Mean distance मतलब it is the average distance between Earth and the Sun. So कितना है ये? 1.496 into 10 raised to 11 meter. That is the one astronomical unit. Okay, light year. There is another concept called light year. So it is the light year मतलब distance traveled by light in vacuum in 1 year. एक साल में जब लाइट ट्रैवल करता है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस? तो 1 लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम. टाइम क्या है? 1 ईयर. 1 ईयर को कन्वर्ट कैसे करते हैं सेकंड्स में? 1 ईयर इज 365 डेज. 1 डे कितना होता है? 24 आवर्स. एंड 1 आवर क्या होता है? 60 मिनट्स. 1 मिनट इज 60 सेकेंड. So 1 year can be converted into 365 into 24 into 60 into 60. What is speed of light? 3 into 10 raised to 8 meter per second. अभी आपको समझा होगा कि seconds में क्यों करना है? Because speed of light is in meter per second. Okay. So when you calculate 1 light year is how much? 9.46 into 10 raised to 15 meter or 10 raised to 12 kilometer. Okay. Okay, ma'am. हाँ, so distance of stars from Earth is generally expressed in light years. मतलब अर्थ से कितना दूर है एक एक स्टार्स. तो दिस इज द वे. तो 1 लाइट मिनट क्या होता है? तो लाइट ईयर पता है आपको, 1 ईयर तक करते हैं. लाइट मिनट क्या करेंगे? इनटू 60 सेकेंड. ओके, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड ना. तो 1 लाइट मिनट इज दीज मेनी सेकेंड्स, मतलब 1.8 into 10 raised to 10 मीटर. लाइट सेकेंड में 1 सेकेंड ही रहेगा, तो इट इज 3 into 10 raised to 8 मीटर. ओके, देयर इज अनदर यूनिट कॉल्ड पार्सेक. It is a distance from where the semi-major axis of orbit of Earth subtends an angle of 1 second. I was hoping to draw a diagram. So this is the, so semi-major axis is this one. Okay, इसको बोलते हैं, ये वाले छोटे को बोलते हैं semi-minor axis. Okay. तो सेमी मेजर एक्सिस इज दिस मच, क्योंकि हम अपना थोड़ा सा अर्थ ये है ना, थोड़ा सा ऐसा फ्लैट, मतलब थोड़ा सा ओवल शेप रहेगा ना. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर सर्कल. सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड. ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आई जस्ट टेल यू.